morning, sir. First of all, I would like to thank Professor Lalita Agarwal, Dr. Rakesh Khurana, Dr. Preet Singh, Dr. Ramesh Gupta, and Shri R.S. Goswami sir for inviting me to this function. Actually, when I was student, I was a mooter, and I participated in many moot court competitions. Though I won nothing in national moot court competitions, but I had a wonderful experience being a mooter in Intra department moot court competition or state level moot court competition. Preet sir was a professor there. He used to teach us about law of torts, family law. There were multiple kind of problems pertaining to Hindu laws, also Competition Commission of India, complaints. We used to prepare for all these kind of moot problems, and thereafter we used to participate in moot court competitions. So here I am not going to tell you what is the benefits of the moot courts, what it's going to be. I am just going to tell you आप इसे क्या बोल सकते हो. When I was in first year, there was inter-departmental moot court competition in our department in the MERI campus. I was asked to participate in that, but I got afraid because I was not that fluent in English, I was not that confident, so I just stepped back and did not participate in that competition. Next time I again participate kiya and they won that competition also. They got selected in some teams, for inter-departmental teams. We had some trainer also who was very encouraging that time. Then when the second year, when we got into second year, I decided that this time I would definitely participate. So I participated in that competition and that trial also. Somehow I didn't go through that trial also. Thereafter, inter-departmental competition was held in our department that time. And I was in second year, but I managed to get best student advocate award in that. I don't know what you or but I managed somehow. That was the first flip in my life that I got recognized as a lawyer, I got recognized as a mooter. Thereafter, our convener sent me to Voices for National Moot Court Competition. And there were almost 33 teams who were participating in that competition. I was praying I may not stand last. Because there were 33 teams, it was only team from Haryana, we were not that confident. We had not good memorials also that time. Somehow we managed to contact some good lawyers. And that time when I was not, because we are in 5-year law, we are not aware about the constitution and some other laws. So that time in our curriculum we were not taught about the law. We were introduced to laws of that only in 3rd year. So I was not introduced to constitution also. It was my folly that time that that was a private competition contract problem, and I introduced fundamental rights in that. Like the for the private company, we have to introduce, we have to enforce our fundamental rights. We should be done as such. ऐसे चलते हैं. I prayed to God कि मैं लास्ट में ना आऊँ. और हम लास्ट में नहीं आए. ऐसा क्यों लास्ट था? हम वहाँ से जब हम वापस आए, हमारे मुझे प्रिंसिपल साहब ने बात पता क्या सीखा? मैंने कहा सीखा तो बहुत कुछ. एक्सपो तो बहुत अच्छी हुई. तो मैं इसीलिए भेजना चाह रहा था. बाकी तुम लोग वहाँ का एक्सपोजर लो, तुम लोग सीखो तो कहाँ खड़े होते हो? क्योंकि लास्ट में जब आप पार्टिसिपेट करने जाओगे, जब आप बाहर दुनिया में देखोगे, लोगों को देखोगे, इतने अच्छे मूवमेंट साइंटिफिक मेहनत करते हैं, तो पूरे का कंटेंट रहने से कोई बात नहीं होने वाला. कई बार आप जैसे लॉ स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें यही पता नहीं करना क्या है. लॉ करने के बाद क्या हमारी लॉ डिग्री इसको भी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है. ये कहते हैं कुछ नहीं कर रहा तो लॉ कर देगा. आज के टाइम एडमिशन भी हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है. तो फिर आपका कंपटीशन जाता है, नेशनल लॉ कंपटीशन, नेशनल स्कूल्स के बच्चों के साथ जाता है, एनएलयू के बच्चों के साथ जाता है, एनएलयू नामसार वगैरह के बच्चे आते हैं, कंपीट करते हैं. और आप लो फॉर्म्स में कहीं ना कहीं नौकरी में लैग बिहाइंड रहते हैं. That doesn't mean कि आप हमेशा लैग बिहाइंड रहोगे. That is a platform like a moot court where you can excel yourself. Let me explain more upon it. जीतना हारना में कभी भी मायने नहीं रखता. Mind my words.
जीतना हारना मूट कोर्ट में क्योंकि मायने नहीं रखेगा और ये रखता, बट मैटर इज यू आर पार्टिसिपेटिंग इन इट विद योर बेस्ट एफर्ट्स। कैसे बेस्ट ऑफ मेमोरीज क्या कीजिए, कैसे बेस्ट ऑफ जजेस के सामने जो आपको एडवोकेट करेंगे उनके सामने पार्टिसिपेट करके दिखाइए, अपनी ओरल एडवोकेसी अपने रिटन एडवोकेसी को शार्पन कीजिए और अपने आर्गुमेंट्स मजबूत तरीके से पेश करिए। आपके अभी मूल को प्रॉब्लम पड़ रहा था, हमारी भी ऐसी आती थी। अब मुझे नहीं पता कि कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, पर हर एक टीम का मिनिमम केस नहीं होगा। डेफिनेटली जरा ये ट्राई किया गया है थोड़ा सा प्रोपोर्शन किसी एक पार्टी के फेवर में है, थोड़ा एक पार्टी के फेवर में है, कुछ लोग पंचायत के फेवर में है, कुछ लोग दूसरे फेवर में आएंगे, so that you can have an arguable case while you are arguing before a judge. आपने जितना हारना बेटर नहीं करेगा जज के लिए, आपने जिस तरीके से अपना केस प्रेजेंट किया, कॉन्फिडेंस के साथ आप वहां पे बोल रहे हैं, व्यू पॉइंट के साथ आपने अपना व्यू पॉइंट रखा है, स्टेप टू स्टेप रखा है, आशीष को फैक्ट्स पे कितनी कमांड है, लोग ऊपर आपने कैसे एप्लीकेबल किया उसको, उसके ऊपर एप्लीकेबल लोग क्या था, वो मैटर करेगा। और ये स्किल्स जब आप किसी भी इंटरप्राइज में इंटर करोगे डाउन द लाइन ऑफ योर करियर एज ए जज, एज ए एडवोकेट, एज ए सरकारी एडवोकेट, एज ए मैनेजर, एज ए बिजनेसमैन आल्सो, यू विल हैव टू। I have been C.J.M for the longest period. I have been in the service for last 13 years. ये बात में मूट कोर्ट के तो ऐसे समझ सीखते हैं that are helping me out still. जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हो, you may not have an arguable point. The other person is not favorable to you. You are finding him is not convincing about your point. Address him by the regions. The regions for your arguments, and then what are your arguments? Negative आपने पहले कह दिया कि ये तो फायदे का हो नहीं सकता. That is not an excuse. That is not an argument. पहले आप ये बताओ कि क्यों नहीं हो सकता. आप जो स्टेप टू स्टेप कन्विंस करोगे किस बात में नहीं हो सकता. पहले आप स्टार्ट रख सकोगे, फिर उसका दूसरा फैक्ट रखोगे, तीसरा फैक्ट रखोगे, धीरे धीरे उसके माइंड में डेंटिंग होती जाएगी. बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, और फिर आपने कहोगे ये नहीं हो सकता. हो गया यार, बात ठीक है. आपको let me give an example. चंद्रचूड़ साहब की एक जजमेंट आई थी about adultery. Joseph Stein वाली जजमेंट. I think most of you have heard about it. जिसमें adultery को unconstitutional डिक्लेयर किया गया है. क्यों कहा जाता है कि वकालत का प्रोफेशन दलीलों का खेल है? आप यहाँ पे सोच रहे हो कि क्या दलीलें होती हैं, क्या कुछ होती हैं. दलीलें in English simply is arguments. The way you pick up the arguments, the way you address your arguments, the way you try to convince the judge is the first reason for you getting a relief. अगर आप अपने अच्छे तरीके से आर्गुमेंट नहीं रखोगे तो आप अच्छे तरीके से अपना केस कन्विंस नहीं कर पाओगे जज को. जो साइन जजमेंट में पहले हमें आर्टिकल 50 क्लोज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का तो कहता है कि बच्चों के लिए और लेडीज के लिए स्पेशल कानून बनाया जा सकता है. सेम केस पे आर्गुमेंट हुआ था चंद्रचूड़ साहब के फादर साहब के पास, और उस केस में उन्होंने पुलिस में आर्गुमेंट ये हुआ था कि जो लेडीज हैं अडल्टरी करती हैं तो वे आर नॉट लाइबल, दे आर नाइदर लाइबल एज एन अडल्टर और एक्यूज्ड. सो डोंट यू थिंक इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. उन्होंने ये कहा था इट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, रीजन सिंपली बी because there is exception carved out under article 15 clause 3 and there is political criticism in favor of ladies and the children. Hence, उनको किसी भी तरीके का प्रिविलेज दिया जा सकता है. आप उसको भी देखते हो, आपने जिसके सेक्ट भी आपने पढ़ा है कि सारे के सारे 15 क्लोज से निकले हुए हैं. फिर जब जो साइन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आर्टिकल हुआ उसके टाइम पे वकील सामने 50 क्लोज निकल गए. दूसरे सिंपल ये बात कही कि जो आर्टिकल 4 की जो अडल्टरी का सेक्शन है आईपीसी का, फॉर एग्जांपल आई एम नॉट टेलिंग यू रिकॉल इट, ये सिंपली कहता है कि इट क्राइम ऑफ द हस्बैंड और विद द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इट मींस द वाइफ इज चैटर ऑफ हस्बैंड और विद प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड दैट इज derogatory from the dignity of the woman. That should not be accepted and that stand in violation of article 14. What should be convinced? Same no point उसके अंदर भी था आर्टिकल 3, आर्टिकल 14 भी था. सेम आर्गुमेंट अगर सिंपल दूसरे में क्या किया जो आर्गुमेंट करने वाले थे वकील थे, उन्होंने अपने आर्गुमेंट का
नक्शा चेंज किया, मैंने अपने आर्गुमेंट की धारा को चेंज किया, अब दे गॉट इट स्टक डाउन। ऐसे ही आपका 377 के ऊपर हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जो वकील होता है जिस तरीके से वो आर्गुमेंट को पुट अप करता है, वो 99% केसेस में भी जज रिलीफ ना देने वाले जज को भी अपने फेवर में मोल्ड कर सकता है। It all depends how do you argue your case, how do you put up your case, how you are putting up your case in a positive manner, in a very delicate manner. It's just like in a castle of sands. Just keep on building it, and one small mistake just collapse it. ये आपको बड़ा अच्छी तरीके से ये जो गुण है मूड कोर्ट्स का, ये जो एडवोकेसी का गुण है, शायद आपको सिखाने के लिए मूड कोर्ट बड़ा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अपना जब मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेशन मैंने क्यों कहा कि जीतना मैटर नहीं करता, पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। When I was in third year, I participated in Swara Moot Court competition.